गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स इफ़ेक्ट्स। इलेक्ट्रिक करंट और उसके जो प्रभाव होते हैं वो पढ़ने जा रहे हैं। यू माइट हैव ट्राइड द गेम हाउ स्टडी इज़ योर हैंड suggested in chapter 12 of class 6. If not, you may try it out now. Paheli and Bujo had also set up the game by connecting an electric circuit as suggested in class 6. They had lots of fun trying it out with their families and friends. They enjoyed it so much that they decided to suggest it to a cousin of theirs who stayed in a different town. So Paheli made a neat drawing showing how the various electric components were to be connected. Can you draw the circuit conventionally? It made Bhujo wonder if there was an easier way to represent these electric components. Symbols of electric components. Some common electric components can be represented by symbols. Some electric components and their symbols are shown. You may come across different symbols for these components in different books. However, in this book, we shall be using the symbols shown here. Look at the symbols carefully. In the symbol for the electric cell, notice that there is a longer line and the shorter but thicker parallel line. Do you recall that an electric cell has a positive terminal and a negative terminal? In the symbol of the electric cell, the longer line represents the positive terminal and the thicker shorter line represent the negative terminal. देखो ये एक 4.1 में ये एक थिकर एंड जो थिनर है वो बना हुआ है और इसको देखो ज्वाइन किया हुआ है। तो इससे क्या है, ये एक सर्किट जो है वो सर्किट जैसा बनाया हुआ है। ठीक है। फॉर अ स्विच, the longer line represent the positive terminal and the thicker, shorter line represent the negative terminal. For a switch, the on position and the off position are represented by the symbol as shown. The wires used to connect the various components in a circuit are represented by lines. A battery and its symbols are shown. देखो 4.1 में बताया हुआ है. Do you know what a battery is? Look at the symbol of a battery. Can you make out what a battery could be? For some of the activities we may need more than one cell, so we connect two or more cells together as shown in figure 4.2. Notice that the positive terminal of one cell is connected to the negative terminal to the next cell. Such a combination of two or more cells is called battery. Many devices such as torch, transistor, toys, TV remote control use batteries. However, in some of these devices, the electric cells are not always placed one after the other as shown figure point 2. इसके अंदर देखिए, sometimes the cells are placed side by side. Then, how are the terminals of the cells connected? Look carefully inside the battery compartment of any device. There are usually a thick wire or a metal strip connecting the positive terminal on the cell टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द नेक्स्ट सेल. आप टीवी का रिमोट देख लीजिए. रिमोट में आप देखते होंगे एक जगह स्प्रिंग होती है और एक जगह जो है वो कॉपर की प्लेट लगी हुई होती है ना, मेटल की स्ट्रिप होती है. तो हम अपने सेल को कनेक्ट करते हैं, है ना, फिर टीवी का रिमोट वर्क करने लग जाता है. ठीक है. In order to help you to place the cells correctly in the battery compartment, plus and minus symbols are usually printed there. How can we connect the cells
To prepare batteries for our activities, you may make a cell holder as shown in figure 4.14.4 using a wooden block, two iron strips and rubber band. It is necessary terminal of one cell is connected. It is necessary that the rubber band hold the metal strips tightly. You could also buy cell holders from the market for making batteries of two or more electric cells. Place the cell in them properly, such as that the positive terminal of one cell is connected to the negative terminal of the next cell. Connect a piece of wire each to the two metal clip on the cell holder as shown in 14.5. इस तरीके से, ठीक है। ऐसा आपने देखा है ना, कई खिलौनों की बैटरीज में ऐसा आता है, तो ऐसा आपको एक बैटरी होल्डर आपको ऐसा लेना है, ठीक है। और उसमें आप बैटरी कनेक्ट करके देखना, फिर आप उसमें कुछ भी सेल है या कोई भी टॉय को कनेक्ट करोगे तो वो ऑटोमेटिकली चलने लग जाएगा। ऐसे आप एक्टिविटी 4.1 का डायग्राम जो है वो आप देख सकते हो। फिर यहाँ पे देखो 14.7 में ये भी देखो, एन इलेक्ट्रिक सर्किट आप बना रखा है, ठीक है। हीटिंग इफेक्ट एंड इलेक्ट्रिक करंट। टेक अ इलेक्ट्रिक सेल, अ बल्ब, अ स्विच एंड कनेक्टिंग वायर्स, मेक एन इलेक्ट्रिक सर्किट एज शोन फिगर 14.9। सब में यहाँ पे देखो, आपको यहाँ पे देखना है। एक मिनट, यहाँ पे हम देख लेते हैं। Make a circuit as shown in figure 14.10. Take about 10 centimeter long piece of nickel wire and tie it between the nails. Okay, and touch the wire. Now switch on the current in the circuit by moving the switch to on position. After a few, the wire gets hot when an electric current passes through it. This is the heating effect of the electric current. Can you think of any electric appliances where the heating effect of the electric current is used? Make a list of such appliances. You might have seen an electric room heater or an electric heater used for cooking. All these contain a coil of wire. This coil of wire is called an filament. You may have noticed that when these appliances are switched on, requirements, the wire of different materials and different length and thickness are used. The wires used for making electric circuits do not normally become hot. On the other hand, the elements of some electric appliances become so hot that they are easily visible. अब बल्ब में देखना, जब हम बल्ब को लगाते हैं तो क्या होता है, जब अंदर से फिलामेंट लग रहा होता है तो हम बल्ब को टच करते हैं तो बल्ब गर्म होता है ना। तो वो इसीलिए होता है क्योंकि उसमें जो फिलामेंट है, जो करंट पास हो रहा है, वो उसको हीट दे रहा है, ठीक है। ये देखिए ट्यूबलाइट पर, ठीक है। हम CFL को भी हम ऐसे इस तरीके से हम देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए, जब कोई चीज़, जब क्या होता है, अगर हम जब वायर जो है वो प्रॉपरली जो है अगर वो नहीं कनेक्टेड होता है तो क्या होता है, जो फ्यूज़ है वो ख़राब हो जाता है। आपने ऐसा जो है 14.14 में देखो, फ्यूज़ यूज्ड इन बिल्डिंग्स। हमारे घरों में भी इस तरह के फ्यूज़ काम में लिए जाते हैं जहाँ पर वायर जो है अटैच होता है, जिससे कि हमारा मीटर्स जो है वो चल रहे होते हैं। अगर ये प्रॉपर वे में नहीं हो तो क्या होगा, बिजली मीटर जो है वो बंद हो जाएगा और बिजली कट अपने आप बंद हो जाएगी, है ना। Wire made from some special material melt quickly and break when large electric current are passed. हमारे जो घर की जो देखिए, जो इंडस्ट्री में जो वायरिंग होती है वो अलग होती है, घर में जो वायरिंग होती है वो अलग होती है। इसीलिए जहाँ पर हैवी लाइट की ज़रूरत होती है, हैवी इलेक्ट्रिक फ्यूजेस की ज़रूरत होती है, वहाँ पे हैवी वायरिंग यूज़ होती है। और जहाँ पर लो मैक्सिमम की ज़रूरत होती है वहाँ पे लो सप्लाई के लिए लोअर क्वालिटी जो मिनिमम मैक्सिमम जो वायर होते हैं वो यूज़ होते हैं, ठीक है। अभी यहाँ पे देखिए, मैग्नेट इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट।
Take the cardboard tray from inside a discarded matchbox. Wrap an electric wire and few times around the cardboard tray. Place a small compass needle inside it. नाउ कनेक्ट द फ्री एंड ये एक्टिविटी दे रखी है, तो इसमें बताएंगे कि अगर हम कोई भी चीज़ को, जैसे हमने बनाया मैग्नेट, आपने लास्ट टाइम पढ़ा था मैग्नेटिक करंट कैसे होता है कि अगर आपने कोई वायरिंग को जोड़ा है और अगर आप वहाँ पे दूसरा होल्डर रखते हैं तो वो अगर उसमें आपने मैग्नेटिक पोर्शन लगाया तो वो क्या करेगा, मैग्नेटिक उसको खींचेगा, ऑब्वियसली उसको खींचेगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है, द कॉइल इन द अबव एक्टिविटी बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट व्हेन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज थ्रू इट। When the electric current is switched off, the coil generally loses its magnetism. Such coils are called electromagnets. The electromagnets can be made very strong and can lift very high, very heavy loaded. कहाँ पर होता है, जहाँ पर फैक्ट्रीज वगैरह होती है वहाँ पर होता है। इलेक्ट्रिक बेल, वी आर क्वाइट फेमिलियर विद एन इलेक्ट्रिक बेल, इट हैज़ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट इन इट। लेट अस सी हाउ इट इज़ वर्क। 14.420 में ये बताया हुआ है। ये इलेक्ट्रिक बेल जो है वो इस तरीके से वर्क करती है। ठीक है, हम जब भी डोर बेल बजाते हैं तो क्या होता है, अंदर बेल रंग करती है, वो आपस में क्या होता है, पुलिंग पुश की भी होती है। अगर आपको कोई भी इसमें कोई दिक्कत होती है तो आप मुझे पूछ सकते हैं, एक बार इसको पढ़ के देखिएगा। अगर कोई भी दिक्कत होती है तो नाउ फील फ्री आस्क मी।